Assalamu alaikum, dear students. This is chapter number 5, linear equations from book 1. Exercise 5a, page number 117, question number 1. Statement of the question: solve each of the following equations. This is part F. Y minus 2.4 equal to 3.6. हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. इन दिस इक्वेशन y इज द वेरिएबल, तो इस वेरिएबल को हमें लेफ्ट साइड पर रखना है, बाकी सब कुछ हम राइट साइड पर ले जाएंगे और आखिर में y के अगेंस्ट हमने कोई भी वैल्यू जो आएगी वो फाइंड आउट कर लेनी है. तो देखिए यहाँ पर जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, these are to be shifted towards right with change in their sign. अब यहाँ पर देखिए एक वैल्यू है ये -2.4, ये शिफ्ट होगा राइट साइड पर with change in its sign. So y is equal to 3.6 as it is, और ये 2.4 शिफ्ट होगा towards right with change in its sign. अब उसके बाद इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. y इज इक्वल टू 3.6 और 2.4 को जब हम एड अप करते हैं तो देखिए क्या होता है, 0 डेसिमल पॉइंट देन 6. सो y कम्स इक्वल टू 6. y इक्वल टू 6 इज द आंसर. दिस वे दिस इक्वेशन इज सॉल्व्ड. क्वेश्चन 2 इन द सेम वे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. मैंने सिलेक्ट किया है इसमें से पार्ट एफ, दैट इज 3 माइनस 7y इक्वल टू -18. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स थे उन तमाम में हमें वेरिएबल जैसे x या y यूज़ किया गया, तो उसमें कोएफिशिएंट 1 था, राइट. यहाँ पर कोएफिशिएंट -7 है. तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल 1 नहीं है, बल्कि उसके अलावा कुछ भी हो सकता है. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कांस्टेंट को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स राइट विद चेंज इन इट्स साइन. सो -7y equal to -18 and 3 shifted towards right with change in its sign, so -3. -7y is equal to -18 -3 results -21. ये एड अप हो जाएंगे, राइट. अब इसके बाद डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय -7. सो यहाँ पर भी -7 से डिवाइड करेंगे, इधर भी -7 से डिवाइड करेंगे. दिस इज cancelable with it, and same way it is cancelable with it 3 times. So y is equal to 3. We have got y equal to 3. This way equation is solved. Now each part of question number 2, इसमें -3y minus 7.8 equal to -9.6. We have to solve it फॉर द वेरिएबल y. तो सबसे पहले जो कांस्टेंट है, दिस इज टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट विद चेंज इन इट्स साइन. तो देखिए इसे हम रेस्ट ऑफ द वैल्यू टू बी रिटन एज इट इज. सो -3y इक्वल टू -9.6, और ये जो -7.8 है, दिस इज टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट विच चेंज इन इट्स साइन, राइट. अब उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं. राइट साइड पर दोनों जो कांस्टेंट्स हैं उनके साइंस डिफरेंट हैं, सो इनका डिफरेंस आएगा और साइन माइनस का लगेगा बिकॉज उसकी प्लेस वैल्यू ज़्यादा है. सो -9.6 प्लस 7.8 इज -1.8. Afterwards, dividing both the sides by this -3.
-3 और यहाँ पे भी divided by -3. This is cancelled with it. In the same way, it is cancelable with it. How many times? Yes, 0.6 times. 0.6 times. So this way y is equal to 0.6. It is solved. Now part J of question number 2. 1 whole 1 by 2 minus 2y equal to 1 by 4. First of all, this mixed form is to be converted into improper form. 2 ones are 2 plus 1 3. 3 by 2 minus 2y equal to 1 by 4. Now this 3 by 2 is the constant to be shifted towards right with change in its sign, and rest of the statement to be written as it is. So minus 2y equal to 1 by 4 minus 3 by 2, right? Now minus 2y equal to, take LCM of denominators, which comes 4. LCM divided by denominator multiplied by numerator comes 1. In the same way, LCM divided by denominator multiplied by numerator comes 6 with minus sign. So now it is minus 2y equal to minus 5 by 4, right? Now dividing both the sides by minus 2. So minus 2, and over here also divided by minus 2. This is cancelable with it, and over here it results y equal to minus with minus comes plus. So 5 by 4 twos the 8. So y equal to 5 by 8 is the result. Now I do question number 3. In question number 3, solve each of the following equations, and I select part D for the solution. In part D, the statement is 2y minus 7 equal to 7y minus 27. Over here, to solve it for the variable y, variable जो भी राइट पर है is to be shifted towards left with change in its sign, और जो constant left पर है it is to be shifted towards right with change in its sign. So this way 2y equal to minus 27 to be written as it is. ठीक हो गया? अब देखिए minus 7y होकर ये लेफ्ट पर आ जाएगा. सो मैं इसे ज़रा डिफरेंट इंक से लिखता हूँ. minus 7y, और ये 7 इधर दूसरी साइड पर राइट साइड पर आ जाएगा विथ चेंज इन इट साइन. सो प्लस 7. दिस वे द डिफरेंस बिटवीन 2y एंड 7y वो हम यहाँ नोटिस करेंगे, विच इज minus 5y. minus 5y इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंस हमें मिलेगा minus 20. डिफरेंस क्यों? बिकॉज दीज हैव द अपोजिट साइंस. तो इनका डिफरेंस 5y आया और इसके साथ साइन लगा माइनस का. इन द सेम वे ओवर हियर द डिफरेंस बिटवीन 27 एंड 7 एंड द साइन इज ऑफ 27. अब इसके बाद minus 5y equal to minus 20, dividing both the sides by minus 5. So dividing both the sides by minus 5. This way, this minus 5 is cancelable with this minus 5,
and over here this minus 5 is cancelable with this minus 20. How many times? Yes, 4 times. So y is equal to 4 is the result we have found. This way it is solved. Now question number 4. Solve each of the following equations. I select from question number 4 part D. Now the statement of part D is 3 into 2 minus 0.4x equal to 18. This question is a bit different from the previous questions. यहाँ पर हमें सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है. When we open this bracket, this 3 will be multiplied by each and every inner term, right? Because 3 और ब्रैकेट के दरमियान hidden multiplication है, कोई साइन नहीं है. So 3 is in multiplication with this 2 and with 0.4 as well. Now opening the bracket, 3 2s the 6 and 3 multiplied by 0.4 comes 1.2x, right, equal to 18. Now the constant is to be shifted towards right with change in its sign. What is constant here? That is 6. So minus 1.2x is equal to 18 minus 6, this way. Now solving it, minus 1.2x equal to 18 minus 6 results 12. Now dividing both the sides by coefficient of variable, which is minus 1.2. So minus 1.2, over here also minus 1.2. This is cancelable with it, and this is also cancelable. But first of all, we'll solve this decimal point. Decimal point to be shifted towards right by 1 digit, right? So यहाँ पे कोई digit नहीं है, तो इधर हम 0 लगाकर इसे 120 बना देंगे. Now 120 divided by 12, right? अब कैंसिलेशन करते हैं. On 12, this is cancelable 10 times, this is 1 time, और ये माइनस है, ऊपर प्लस है, इसलिए इनका प्रोडक्ट, साइंस का प्रोडक्ट माइनस आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइंस आर इन मल्टीप्लिकेशन विद वन अनदर. सो रिजल्ट में माइनस रिफ्लेक्ट होगा. यहाँ पर माइनस और ये भी माइनस, इसलिए ये प्लस हो गया. सो x इज इक्वल टू minus 10, which is solved, right? Here the statement of part F is 4 into 3y plus 4.1 equal to 7.6. Question number 4, part F. Now to solve it in the same way how we have solved the previous part. On opening the bracket, this 4 will be multiplied by each and every inner term. So this way, देखिए जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4 अंदर की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4 3s are 12y and then 4 multiplied by 4.1, तो ये हो जाएगा 16.4 equal to 7.6, right? Now in the next part, this constant 16.4 is to be shifted towards right with change in its sign. So rest of the statement is to be written as it is. So 12y equal to 7.6, और जो constant है that is to be shifted towards right with change in its sign. So minus 16.4, right? अब उसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं. तो 12y
एज इट इज इक्वल टू इनका डिफरेंस आ जाएगा, और उसके साथ साइन क्या होगा, माइनस का या प्लस का, माइनस का, राइट, क्योंकि माइनस की जो वैल्यू है, जो वैल्यू जिसका प्लेस वैल्यू बड़ी है, उसका साइन आएगा। इन दोनों का डिफरेंस हम लिखेंगे, comes minus 8.8. Now dividing both the sides by coefficient of variable, which is 12 here. So this way, dividing by 12 both the sides. This is cancelable with this, and over here ये decimal point जो है, this is shifted towards right with by one digit. So इसी तरह हम denominator में भी करेंगे, so यहाँ पर 120 हो जाएगा. Now do cancellation on 4, तो on 8 कर देते हैं डायरेक्टली. on 8 ये 11 आ जाएगा, और ये क्या आता है 15. So y is equal to minus 11 by 15. This is solved this way. Now question number 4, part J. The statement is 5 into 5y minus 6 equal to 4 into y minus 7. Now to solve it, देखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो लेफ्ट साइड पर 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय ईच एंड एवरी इनर टर्म. इन द सेम वे, opening the bracket on the right side, this 4 will be multiplied by each and every inner value. Now do it. 5 5s the 25, so 25y minus 5 6 is the 30 equal to, opening this bracket, 4 multiplied by y, 4y, and 4 7s are minus 28. अब इसके बाद बहुत सिंपल, ये देखिए, कांस्टेंट टू बी शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट विद चेंज इन इट्स साइन, एंड वेरिएबल टू लेफ्ट साइड विद चेंज इन इट्स साइन. रेस्ट ऑफ द वैल्यूज टू बी रिटन एज इट इज. ये इधर लेफ्ट पर आ जाएगा, और ये कांस्टेंट राइट पर चला जाएगा विद चेंज इन देयर साइन. साइंस चेंज होंगे. देखिए लिखते हैं अब, this is 25y equal to minus 28. देखिए 4y shifted towards left with change in its sign, तो change sign हो गया, तो minus 4y, yes, यहाँ पे लिखते हैं minus 4y. And this minus 30 shifted towards right with change in its sign, so is plus 30. Now watch the difference between 25 and 4 comes 21y equal to, here also the difference, because of the difference of the signs, तो difference आएगा इनके दरमियान 2 equal to 2. So now dividing both the sides by 21, यहाँ पे भी 21 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 21 से डिवाइड होगा. This way, after cancellation, left side is free of the coefficient, so left पर सिर्फ वेरिएबल रह गया, y equal to 2 by 21. This way it is solved. Now question number 5, solve for each of the following equations. Part D of question number 5, the statement is y by 4 minus 8 equal to minus 2. देखिए सबसे पहले हम इसमें कांस्टेंट को शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स राइट विद चेंज इन इट्स साइन. रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट टू बी रिटन एज इट इज.
So y by 4 equal to -2 plus 8. So it would be y by 4 equal to, इनका डिफरेंस आ जाएगा 6. ठीक. Now multiplying both the sides by 4, क्योंकि 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है इसलिए दोनों साइड्स पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि लेफ्ट साइड पर ये कैंसिलेशन के बाद सिर्फ y रह जाए. सो y इक्वल टू 6 4s are 24. Right? This way it is solved. Now question number 6. Question number 6 में भी इसी तरह से इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है. I have selected part D over here. The statement is 2 by 3y minus 3 by 4 equal to 2y plus 5 by 8. देखिए इसमें हम सबसे पहले वेरिएबल को शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट विद चेंज इन इट्स साइन, और कांस्टेंट है उसे शिफ्ट किया जाएगा टूवर्ड्स राइट विद चेंज इन इट्स साइन, एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यू टू बी रिटन एज इट इज. सो 2 by 3y equal to, this is 5 by 8. This 2y shifted towards left with change in its sign, so minus 2y. This minus 3 by 4 shifted towards right with change in its sign, so plus 3 by 4. Right? Afterwards we have to solve it. ये देखिए ये है 2 by 3y. May I write it as 2y by 3? जी बिल्कुल लिखा जा सकता है. अब लेफ्ट साइड पर हम LCM लेते हैं डिनोमिनेटर्स का. This comes 3 because over here denominator is not mentioned, so denominator is 1. 1 और 3 के दरमियान LCM 3 आ गया. अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं जस्ट लाइक वी डू सब्ट्रैक्शन इन कॉमन फ्रैक्शंस. सो देखिए ये आ जाएगा 2y माइनस दिस LCM डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर comes 3 multiplied by numerator, so 6y equal to, इधर भी उसी तरह take LCM of denominators, comes 8. Now it comes 5 plus 6, right? Now solving this much is minus 4y by 3 equal to, इसे सॉल्व करेंगे तो 11 by 8. अब इसके बाद हम दोनों साइड्स पर LCM कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल से डिवाइड करेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या चीज़ होती है? वो वैल्यू जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में ये -4 by 3 मल्टीप्लिकेशन में है. इस पूरे -4 by 3 से हम दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देंगे. सो मल्टीप्लाइंग हियर विद -3 by 4, दोनों साइड्स पर इससे मतलब मल्टीप्लाई हुआ है तो डिवाइड कर देंगे, यानी इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे. तो in the same way multiplied by -3 by 4. This way यहाँ से तो ये वाइप ऑफ हो जाएगा, जाहिर सी बात है. this 3 cancelable with this 3 and 4 cancelable with this 4. Minus multiplied by minus results plus, right? So इधर तो आ जाएगा y.
Now y equal to, now on right side 11 multiplied by 3, 33, and 8 by 4, 32. So y equal to minus 33 by 32. अब देखिए ये वैल्यू आया है कॉमन फ्रैक्शन में, लेकिन इम्प्रॉपर फॉर्म है, इसे मिक्स फॉर्म में हम चेंज करेंगे. सो y इज इक्वल टू माइनस 1 होल 1 बाय 32. Its answer, right? This way part D of question number 6 is solved. Now question number 7. This question is also in the same way. Solve each of the following equations. Over here each question is to be solved with a particular method, और हर अपकमिंग क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन की निस्बत थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें कुछ ना कुछ इजाफा है जिसे हमें सॉल्व करने में जाहिर सी बात है उसको स्टेप बाई स्टेप एक आधा बढ़ जाता है उससे. तो क्वेश्चन नंबर 7 में आई हैव सिलेक्टेड पार्ट बी फॉर द प्रैक्टिस. स्टेटमेंट ओवर हियर इज 12 by y minus 1 equal to 2 by 3. इस क्वेश्चन नंबर 7 में चूंकि ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, राइट, और ये भी कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, ये भी इसी तरह से, मतलब लाइक अ रैशनल नंबर इट इज रिटन. तो यहाँ पर हम सहारा लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का. We'll do cross multiplication. So this numerator to be multiplied by this denominator. This denominator multiplied by numerator of the other side, and this denominator multiplied by numerator of the other side. तो ये हम इसके इक्वल कर देंगे. So 2 multiplied by y minus 1. 2 multiplied by y minus 1 is equal to 3 multiplied by 12, right? 2 multiplied by y minus 1 हमने लेफ्ट पर लिख दिया और 3 multiplied by 12 हमने राइट पर लिख दिया. अब इक्वेशन आसान हो गई हमारे लिए टू सॉल्व. ओपनिंग द ब्रैकेट इट वुड बी 2y minus 2 equal to 12 3s are, yes, 36. 12 3s are 36. Now constant minus 2 to be shifted towards right with change in its sign. So obviously it is 2y equal to 36 plus 2. तो ये हो जाएगा 2y equal to 2 plus 36 results 38. उसके बाद बहुत आसान स्टेप, लास्ट स्टेप, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल. यहाँ देखिए कि 2 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है, सो डिवाइडेड बाय 2, इधर भी डिवाइडेड बाय 2. तो ये कैंसिल आउट हो गया and this 2 is cancelable over here. क्या आएगा 19. So now y is equal to 19 by 1 means y equal to 19. This way this part B is solved. जी स्टूडेंट्स, आज हमने लीनियर इक्वेशंस बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पर सॉल्व की. तो इनमें आपने देखा कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हमने मूव किया. शुरू में बहुत आसान स्टेटमेंट थी और बाद में जब क्वेश्चन नंबर 7 पर हमने ये लास्ट पार्ट बी सॉल्व किया तो उसमें थोड़ा सा एक पहले से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एक तरह की स्टेटमेंट थी. तो आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस टॉपिक के अंदर आपकी कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी, राइट.
more the practice will make you more the proficient in mathematics, right? इन अल्फाज के साथ now wish you all the best. Allah Hafiz.